Self and you can ask your doubt. Okay, so I welcome all of you in this practical. Now, as you all know that we have completed all the Excel practicals. Now, in what is our today's goal? Our today's goal is start with our first MySQL practical. Now, before going to start, can anyone tell me what is the full form of SQL? Yes, anyone? Structured query language. Yes. So the full form of SQL is structure query language, which means what? In this language, we are having some particular structure. What do we mean by structure? Structure is nothing but a some special kind of sentence. अगर वो उस सेंटेंस में अगर आप गलती करोगे देन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा और यू कैन से क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी. Okay, so remember what is the full form of SQL because at the time of your Viva, we can ask this question. What is the full form of SQL if you don't know anything? Okay, so let me show you your first MySQL practical sheet. Okay, so let me first present my screen to you. Yes, please let me know. Can you able to see my screen? Yes, sir. Okay. एंड रिमेंबर आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरी वन. जब तक आप आंसर्स नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे. एंड लेट मी टेल यू this practical is little lengthy practical. Okay, so I think we required 2 lectures to complete this practical. So let me first show you your practical sheet. So you can see, yes, please let me know, can you able to see this PDF? Yes, sir. Okay. अब आपको कहीं पर भी कुछ डाउट आएगा देन यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ देन एंड आस्क योर क्वेश्चंस. Okay, again, as you all know, that is this is your first MySQL practical. और हम फिर से जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं. MySQL में क्या होगा, कैसे होगा, हम क्वेरीज कैसे परफॉर्म करेंगे एंड सो ऑन. बट आई एम होपिंग दैट कि आपने मैम के थोड़े बहुत तो लेक्चर अटेंड किए होंगे जिससे आपको MySQL का थोड़ा तो बेसिक आना चाहिए. What do we mean by basic? Basic means what is the meaning of data type, why we use primary key constraint, and so on. So as you can see in this practical sheet, we need to perform the following 4 questions. And after that, we are having these many sub questions. So as I told you, this practical is little lengthy practical. सो हम देखते हैं जितना कवर कर पाएंगे हम 6 बजे तक हम उतना कवर करेंगे और बाकी का हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में करेंगे. Okay, so our first step is how we are going to open MySQL command line. For that, you just go to this start option. Then you find whether we are having MySQL command line in it or not. So you can see here I am directly having MySQL command line. Okay, for downloading this software, you just first search on YouTube how you are going to download this software, MySQL command line. Okay, it require at least 2 hours to download it. और ये प्रॉपरली डाउनलोड होना चाहिए तभी वर्क करेगा. अदरवाइज ये वर्क नहीं करने वाला है. तो पहले यूट्यूब पर आप सर्च कर लो इसे डाउनलोड कैसे करना है तो आप बाद में उससे डाउनलोड करके फिर आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो. सो लेट मी ओपन दिस सॉफ्टवेयर फॉर यू. So you can see after clicking one dialog box appear and if you maximize it then you can see ये इस तरीके से मैक्सिमाइज होगा. ये पूरे स्क्रीन पर मैक्सिमाइज नहीं होने वाला है. Okay, now he is asking me for a password. Okay, now which password I am going to enter?
जब भी आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो वहां पर आपको ये पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो जो जो पासवर्ड आप उस टाइम पे वहां पे एंटर करोगे, सेम पासवर्ड एज इट इज यहाँ पे आपको एंटर करना है। ओके, अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है। नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर। Okay, now after pressing enter, we will get this kind of syntax, or you can say this kind of statements. Okay, this is the basic statements of this software, which is nothing but MySQL. अब हम जो भी प्रैक्टिकल शीट में जो भी काम करेंगे वो अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाला है। Now before going to start with our first practical, you just give the command, which is nothing but show databases. ये कमांड देने से क्या होगा, ये कमांड देने से हम पता कर पाएंगे कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में कितने डेटाबेसेस है। एंड रिमेंबर, whenever you need to end any statement in this software, for that you need to use semicolon. Okay, observe, semicolon is nothing but one dot and comma. Now I am pressing enter. So you can see here I am having 7 databases in this software. This first database, that is become 1 to 7, this I have created yesterday, because yesterday I am having my first practical of MySQL. ओके, अगर आप ये फर्स्ट डेटाबेस को नेग्लेक्ट करो तो आपको इनिशियली ये 6 डेटाबेस ही मिलेंगे। नाउ एज यू कैन सी, आवर फर्स्ट डेटाबेस इज ऑलरेडी क्रिएटेड, दैट इज बीकॉम 1 to 7, बट हमें इसका डुप्लीकेट नहीं बनाना है, तो हम फिर से बीकॉम 1 to 7 ही नहीं है यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके लिए अब हम दूसरा कोई रोल नंबर यूज करेंगे, जो भी आप में से किसी का होगा हम उसका रोल नंबर यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट मी फर्स्ट go through this first question. That is, remember our first question is write MySQL statement to create table department in the database BCom followed by your roll number. Which means what? First we need to create a database. Okay, so can anyone tell me how we are going to create a database? Yes, anybody want to guess? Create database name. Exactly. So we need to give the command create, और रिमेंबर यहाँ पे आपके स्पेलिंग्स एकदम करेक्ट रहने चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी और आपने इंटर प्रेस किया तो फिर आपको सम एरर मिलेगा। सो क्रिएट डेटाबेस, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर आना चाहिए। So create database and database name. As you can see in our practical sheet, our database name is BCom followed by your roll number. Now as you can see we are having 91 to 120 row, 91 to 120 roll numbers. Now can anybody want to tell me any roll number among you, so that I can give that roll number to my database? Yes, so let me give 111. Okay, so create database, and this is our database name. Our database name is BCom 111. Now remember, whenever you need to end any statement in this MySQL, for that always you are going to use semicolon. और सेमीकोलन एंटर करने के बाद आपका स्टेटमेंट एंड होगा, देन यू जस्ट प्रेस एंटर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेरी वी नीड टू परफॉर्म इन आवर टुडेज प्रैक्टिकल। सो ऑल ऑफ यू, आप साइमल्टेनियसली नोट डाउन करते जाओ, बिकॉज आपको अभी ये परफॉर्म नहीं करना है इन योर मोबाइल्स और यू कैन से इन लैपटॉप्स। आज आप खाली ध्यान दोगे कि हम क्वेरीज कैसे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको क्वेरीज पहले से आपके नोटबुक में लिख के रखनी है, और हम वो खाली यहाँ पर चेक करेंगे वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
Yes, please let me know. Yes, sir. ओके, नाउ रिमेंबर, जब तक आप आंसर नहीं करोगे हम आगे नहीं प्रोसीड करेंगे. Okay, now I am pressing enter. So you can see in this way we are getting its output, that is query okay, comma, one row affected in open bracket 0.48 seconds. This is your output and you need to note down this output along with its query. ओके, तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना आपके नोटबुक में, लेकिन उसके नीचे फिर आपको ये सारे क्वेरीज लिखने जो भी हम अब माई एसक्यूएल में परफॉर्म करने वाला है. सो योर फर्स्ट क्वेरी इज क्रिएट डेटाबेस बीकॉम followed by your roll number. So here I am giving some random roll number which is 111, and for ending this statement we need to use semicolon. And after that you just press enter. तो आपको ये output show होगा, that is query okay, one row affected 0.48 seconds. Okay, now after creating this database, we need to use this database. Okay, now can anyone tell me which sentence I need to type for using this database? Use database name. Use database name. So just give that syntax. Use become 111, then give semicolon and press enter. So you can see database change. This is our output. Now in this database we need to enter or we need to create a table. Now which table we need to create? For that you just observe your first question, that is write MySQL statement to create table department in a database become xxx, here become 111 with the following columns: department id. Now in short we are going to write down department id as dept id, then its database type, its data type is small int, and we are using primary key constraint for it. Now tell me, what is the use of primary key constraint? Till then let me write down this create table command. See, always whenever you are going to create any table, then just give this command create table. Create table and table name. Here table name is department, that is DEPT. Okay, and you just open a bracket. After opening a bracket, you just press enter. Okay, आप इसके आगे भी लिख सकते हो, but as you all know MySQL is nothing but structure query language, तो हम इसे प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ लिखेंगे. तो आपको यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट करना है, देन यू जस्ट प्रेस एंटर. ओके, एंटर करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आपको ये एरो शो होगा और कर्सर आपका ब्लिंक करेगा. ओके, इतना होने के बाद अब आपको आपके कॉलम नेम्स यहाँ पे एंटर करना है. ओके, वन इन वन लाइन, दैट इज आवर फर्स्ट कॉलम नेम इज डिपार्टमेंट आईडी. तो फर्स्ट लाइन में हम डिपार्टमेंट आईडी, इट्स डेटा टाइप एंड प्राइमरी की डालेंगे, देन कॉमा. आफ्टर दैट वी आर प्रेसिंग एंटर एंड वी टेक द न्यू लाइन for the next column name. Okay, so let me first type our first column name, which is nothing but DEPT ID. DEPT ID. Now we need to enter its data type without comma. ओके, विदाउट कॉमा. रिमेंबर, अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी कॉमा के जगह पे डॉट डाला या डॉट के जगह पे कॉमा डाला, देन यू विल गेट सम एरर. So its data type is small int. Then we need to add primary key constraint. Okay, so primary key.
अब ये जो भी हमारा सी हमने यहाँ पे क्या क्या डाला, कॉलम नेम इन शॉर्ट DPTID, then its data type is small int, and we are giving the constraint as primary key to this column name DEPTID. Then we are giving comma. Now I am pressing enter. Remember, जब भी आप क्रिएट टेबल कमांड करोगे तो आपको हर एक कॉलम नेम डालने के बाद उसके कंस्ट्रेंट्स ऐड करने के बाद आपको ऑलवेज कॉमा डालना है एंड में। अगर आप नहीं डालोगे तो आपको वो एक ही टेबल में, एक ही कॉलम में सारे कॉलम्स आ जाएंगे। ओके, सो हर एक कॉलम के बाद में आपको कॉमा डालना है, देन प्रेस एंटर। ओके, नाउ यू कैन सी we move towards the next line now. But before proceeding to the next, I want answer. What is the use of primary key constraint? Yes? It identifies each row in a database table. No, it is not identifying each row. So this is not exact meaning of adding primary key constraint. Anybody want to try? Yes? सी फर्क नहीं पड़ता आपका आंसर करेक्ट हो या रॉन्ग हो, आपको आंसर्स करना है। The value is unique to each entry. Sorry, say it loudly. The value is unique to each entry. Yes. See, whenever you are giving primary key constraint in front of any column, okay, which means what? The entries in that column has to be unique. Now what do we mean by unique? अगर आप सी यहाँ पर मैंने DEPT ID को प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड किया है, विच मीन्स व्हाट, अगर डिपार्टमेंट आईडी में अगर आप दो बार से टू एंट्रीज डालोगे, means in the first row you are giving entry as 2 and in the second row also you are giving entry the same, which is nothing but 2, then it will not accept that. मीन्स व्हाट, डिपार्टमेंट आईडी में जो भी एंट्रीज होंगे वो यूनिक होंगे, वहां पे डुप्लीकेट नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ दिस प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes, at least say yes or no. Yes, sir. Okay, now let's move towards the next column. So our next column is D name and its data type is character, and we need to give its length, or you can say its width to be 10 columns, but that width is of variable type. So which data type I am going to use for this D name which is having a variable length? Where? Varchar. Okay, var means variable and char means it is character. Okay, so whenever you need to use any variable length, for that you need to use varchar data type and its length is 10. So वो आप length एक ओपन ब्रैकेट में डालोगे। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड कॉलम ऑल्सो। सो आपको क्या करना है, अब कॉमा डालना है, देन यू नीड टू प्रेस एंटर फॉर द नेक्स्ट लाइन। ओके, नाउ यू कैन सी वी नीड टू ऐड वन मोर कॉलम which is nothing but location. That column represents location, but we are giving its column name to be city. You can see ये जो open bracket में first name होगा, that is the name of our column in my table. Okay, so our name of column is city. Then we need to give its data type. Here also we are having variable width of 10 columns. So again we need to use varchar data type. Okay, now see, और भी आगे हमें और कोई कॉलम्स ऐड करना है क्या? यस,
No. नो, विच मीन्स वॉट, हमने सारे कॉलम्स हमारे टेबल में ऐड कर दिए। तो सारे कॉलम कंप्लीट्स होने के बाद जो ओपन ब्रैकेट हमने फर्स्ट लाइन में ओपन किया था, दैट इज आफ्टर दिस डीईपीटी, क्रिएट टेबल कमांड में डीईपीटी के बाद में जो ब्रैकेट ओपन किया था वो हमें एंड में क्लोज करना है। ओके, सो यू जस्ट क्लोज दैट ब्रैकेट, which means what, now we have completed this sentence. But remember, whenever you need to complete any sentence in MySQL, then you need to use semicolon at the end. तो अगर आप सेमीकोलन एट द एंड यूज नहीं करोगे तो फिर आपका ये क्वेरी वर्क नहीं होगी। सो इसे वर्क करवाने के लिए हमें सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा एट द एंड। नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर। ओके, सो यू कैन सी its output query okay, 0 rows affected, that is 2.42 seconds. Okay, which means what, now our table has created. Now suppose if you want to see this table, then which command you are going to give? Describe. Describe. So let me give that command. Describe table name. Here table name is dept. Okay, now I'm giving semicolon. So you can see in the first column we are getting field, in the second column we are getting its data type, in the third column it is showing me null, and in the fourth column we are giving primary key constraint. Now you can see we have only give primary key to this first column, hence it is showing me pri for the first column only. एंड रिमेंबर, ये थर्ड कॉलम जो है दैट इज नथिंग बट नल, वहां पे मुझे फर्स्ट लाइन में खाली नो दिखा रहा है और बाकी के दो लाइंस में मुझे यस शो हो रहा है। ना व्हाई इट इज शोविंग मी नो, बिकॉज हमने डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की कंस्ट्रेंट दिया है, तो डिपार्टमेंट आईडी में कोई भी एंट्री नल नहीं होगी। ओके, दैट्स व्हाई इट इज शोविंग मी नो। जब भी आप किसी कॉलम को प्राइमरी की अटैच करते हो, विच मीन्स व्हाट, उसके उस कॉलम में जो भी एंट्रीज रहेंगी वो सारी यूनिक होंगी और नॉट नल होंगी। मीन्स हम कोई ना कोई एंट्री उस कॉलम में ऐड करेंगे ही करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we have completed our first question. That is, in the first question they ask only just create the table department. Now let's proceed with the second one. That is, insert 4 rows as follows. Now our aim is to insert the following rows in this table which we have created just now. Okay. Now I want answers how we are going to insert these rows in my SQL. Using which command we need to enter these rows in my table. से गलत होगा चलेगा, but I want reply from your side. Insert into table name. Insert into table name, then next what? Column 1, column 2 the value. Is it proper or do you want to modify it? Insert Into table name. into table name is what? DEPT, right? DEPT. Then Values. yes. So we need this word also.
values. Remember this word. This is not just value, it is values. Then you need to open a bracket. ओके, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हमें क्या चेक करना है? सी, क्रिएट टेबल में हमने जो भी कॉलम जो भी हमने एंटर किए हैं, हमें उनकी एंट्रीज वन बाय वन पुट करनी है. मीन्स यहाँ पे देखो, हमने पहले DPT ID मतलब डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम पहले क्रिएट किया, तो हम फर्स्ट एंट्री भी DPT ID की ही देंगे. सेकेंड कॉलम हमने डी नेम ऐड किया, तो हम सेकेंड एंट्री भी यहाँ पर डी नेम की ही देंगे. थर्ड कॉलम सिटी का है, तो हम थर्ड एंट्री सिटी ही एंटर करेंगे. अगर आप आपकी एंट्रीज आगे पीछे करोगे तो आपके कॉलम में वो एंट्रीज शो होंगी. मतलब मान लो डिपार्टमेंट आईडी में मैंने अगर अकाउंटिंग डाला, तो डिपार्टमेंट आईडी में वो अकाउंटिंग कंसिडर करेगा, बिकॉज दिस इज अ मशीन. ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है. अगर आप कोई भी फर्स्ट कॉलम डालते हो तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री हम फर्स्ट प्लेस पे एंटर करेंगे. जैसे कि यहाँ पे हमारे सेकंड क्वेश्चन में दिया है DPT की फर्स्ट एंट्री है 10, देन डी नेम इज अकाउंटिंग एंड सिटी इज न्यू दिल्ली. और हमने कॉलम भी वैसे ही हमारे टेबल में एंटर किए, तो हम फर्स्ट वैल्यूज किसकी डालेंगे? DPT ID की, विच इज नथिंग बट 10. Then you need to give comma. Then second is D name. Okay, now remember, here you need to note down one thing. जब भी आप डेटा टाइप या फिर स्मॉल इंट, इंटीजर, डेसिमल, और इन शॉर्ट जब भी आप नंबर्स एंटर करोगे इन दिस इंसर्ट इनटू कमांड, ओके, जिनका डेटा टाइप इंटीजर, स्मॉल इंट, डेसिमल इस टाइप का रहेगा, दैट इज न्यूमेरिकल रहेगा, तो वो एंट्रीज हम एज इट इज पुट करेंगे विदाउट इंक्लूडिंग देम इन डबल कोट्स. लेकिन जब भी हम कोई वर्ड, अल्फाबेट, कोई भी सेंटेंस एंटर करेंगे इन दिस SQL, देन फॉर दैट वी नीड टू यूज डबल कोट्स. ओके, सो हियर दिस अकाउंटिंग इज अ वर्ड, which means what? We need to add this word in double quotes. Okay, double quotes means ऊपर जो दो कॉमा आप लगाते हो while writing. Okay, और अगर यहाँ पर अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपको वही स्पेलिंग मिस्टेक आपके टेबल में भी शो होगी. सो अकाउंटिंग हमने ऐड कर लिया, देन अगेन यू नीड टू गिव कॉमा. नाउ वी नीड टू ऐड सिटी. नाउ सिटी इज इन न्यूमेरिक और इन अल्फाबेट्स? Alphabet. Which means what? Again we need to use double quotes. So double quotes, New Delhi. ओके, और यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे आप इसमें टाइप करोगे कैपिटल, स्मॉल, आपको एज इट इज आपके टेबल में शो होगा. ओके, नाउ यू कैन सी हमने तीनों टेबल में एक एक एंट्री पुट कर दी, तो हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. एंड रिमेंबर, फॉर कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस यू नीड टू यूज सेमीकोलन एट द एंड. ओके, फिर आप एंटर प्रेस करोगे और चेक करोगे वेदर दिस क्वेरी इज राइट और नॉट. ओके, सो आफ्टर प्रेसिंग एंटर वी आर गेटिंग आउटपुट इज क्वेरी ओके. सो जब भी आपको ये आउटपुट शो होगा क्वेरी ओके, मीन्स योर सिंटैक्स इज करेक्ट. एंड दिस इज योर आउटपुट, 1 रो अफेक्टेड, 0.24 सेकेंड्स. ओके, ये जो भी आउटपुट आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको एज इट इज नोट डाउन करना है अलॉन्ग विथ इट्स क्वेरी. ओके, अब हमने ये फर्स्ट रो ऐड कर ली, अब हम बाकी के 3 रोज भी ऐड करेंगे इन द सिमिलर मैनर. ओके, फॉर दैट यू कैन यूज एरो कीज फ्रॉम योर कीबोर्ड, जिससे कि आपको फिर से टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे मैं अप एरो की यूज कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो भी सिंटैक्स हमने प्रीवियसली डाला था वो एज इट इज शो होगा. यू कैन सी. ओके, अब मुझे इस सिंटैक्स में चेंजेस करना है. अब हम 10 के जगह पे क्या करने वाला है? नाउ आवर सेकेंड रो इज 20, तो 10 के जगह पे हम 20 करेंगे.
Now in place of accounting, I am going to write research. ओके अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो फिर प्लीज इन्फॉर्म मी. एंड इट्स सिटी इज मुंबई. Okay, you can see now we have changed these these names. Now you just press enter. So again we are getting its output to be query okay, one row affected 0.15 seconds. Now you need to add two more rows. So let me quickly add it. Again you are going to repeat the same step, that is use arrow keys for getting the previous syntax. Then enter 30. Now our D name is sales. ओके ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है. अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक की देन यू विल गेट सम एरर. और एरर आना अच्छी बात है जिससे कि आप आपको मॉडिफाई कर पाओगे या यू कैन से रेक्टिफाई कर पाओगे. ओके सो हियर चेन्नई. नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर. सो यू कैन सी अगेन दिस क्वेरी इज ओके. नाउ अगेन यूज द एरो कीज and enter the last row 40. Then sales. Now instead of sales we are having operations. Okay, operations and its city is Bangalore. Okay, now again I am pressing enter. So you can see again this query is okay. Which means what? Now we have insert all the four rows in my table. Now we have inserted all the four rows in our table. Now we want to see our table along with this rows. Now which query I need to give to show to get this table in this MySQL what you can say MySQL software. ओके अब हमने ये फोर रोज तो एंटर कर ली, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ हमारे ये फोर रोज इंसर्ट हुई है कि नहीं इन माय टेबल. देन फॉर दैट विच कमांड यू नीड टू गिव. Describe. See, using describe you will get this kind of thing, or you can say this kind of stuff which contains column names only, that is dptid, dname and city. बट ये जो आपके सेकेंड क्वेश्चन में शो हो रहा है हमें ऐसा वाला टेबल दिखाना है in my this program. Yeah. Select star from table. Yes. अगर आप ये कमांड देते हो दैट इज डिस्क्राइब dept. ओके तो यू कैन सी जो हमने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया था आपको सेम आउटपुट शो हुआ. Okay, but we don't want this. We want the table which is mentioned in our practical sheet in the second question. For that you need to give this command, that is select. Yes, what you said, select Select star star from from. table name. What is table name here? DPT. DEPT. Okay, now for completing this statement you need to use semicolon at the end. Now I am pressing enter. So you can see now we are getting this table in my SQL. ओके जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन में टेबल है हमें एज इट इज शो हो रहा है. अब आप यहाँ पे एक ध्यान से चीज ऑब्जर्व करो. जब हमने ये इंसर्ट इनटू कमांड दी थी तो इसमें हमने जो एंट्रीज डाली थी दैट इज अकाउंटिंग का ए कैपिटल है और COUNTING ये स्मॉल है. तो वो यहाँ पे एज इट इज लिखा है. ओके अगर आप ये सेकेंड सी भी कैपिटल करते
तो यहाँ पर ये सेकेंड सी भी कैपिटल आपको शो होता. यू कैन सी यहाँ पे मैंने न्यू दिल्ली का एन कैपिटल किया है और दिल्ली का डी कैपिटल किया है, तो वो एज इट इज शो हो रहा है. विच मीन्स वॉट, डबल कोट्स में आप जो भी नेम या फिर जो भी वर्ड एंटर करोगे, भले उसमें आपकी स्पेलिंग रॉन्ग हो, तो आपको वो एज इट इज शो होगा इन दिस सिलेक्ट कमांड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Okay, now this is the answer of this question. Okay, this is the answer of this third one. Display the content of the table DPT. Okay, so display करने के लिए सी remember now one thing, जब भी आपका क्वेश्चन डिस्प्ले से स्टार्ट होगा, ओके मार्क माय वर्ड्स, जब भी आपका क्वेश्चन डिस्प्ले से स्टार्ट होगा तो ऑलवेज आप सिलेक्ट से आपकी क्वेरी स्टार्ट करोगे, और यू कैन से सिंटैक्स आपका ऑलवेज सिलेक्ट से स्टार्ट होगा. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सी सेकेंड क्वेश्चन में. किसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट पूछना है? Yes, anybody want to ask any kind of questions in first two questions? At least say yes or no so that we can go ahead. No doubt, sir. Okay. So let's try to proceed with our next question. So again in the next question we need to create a table in the same database. Okay, so here our database is same, which is BCom 111. Okay, now which table we need to create over here? Yes. Employee. Employee. So in Employee. short, we are using EMP for it. Okay, now you need to tell me which command I should give to create that table. Yes. Create table employee. So create table EMP. Now if you want, you can give EMP followed by your roll number. क्यों? क्योंकि जब भी आप अगर कोई भी पीसी पर वर्क कर रहे हो, अगर उस पीसी में बहुत सारे स्टूडेंट ने अगर सेम कमांड दी हो तो फिर आपका ये टेबल डुप्लीकेट आप माना जाएगा. For that, for neglecting that error, what you are going to do, you just give table name as EMP followed by your roll number, because your roll number is always unique. तो आप चाहो तो EMP को भी आपका रोल नंबर फॉलो करवा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल EMP 111. Okay, because I am considering this roll number only 111. Okay, so हम ये टेबल क्रिएट करेंगे, that is create table EMP 111. अगर आपको ये नहीं डालना है तो आप मत डालना. Okay, now you need to open a bracket, then move on the next line. Okay, for going towards the next line you need to press enter. एंड रिमेंबर जो भी ओपन ब्रैकेट हम यहाँ पे ओपन करेंगे एट द एंड हमें वो क्लोज भी करना है आफ्टर एंटरिंग ऑल द कॉलम्स. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ आवर फर्स्ट कॉलम? EMP ID. EMP ID. ओके, नाउ अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं हर एक कॉलम का फर्स्ट लेटर कैपिटल एंटर कर रहा हूँ. EMP ID. देन now we need to add its data type. What is its data type? Small int. Small int. And here again we are adding primary key constraint on it. Okay, primary key. Now you can see we have entered our first column along with its constraints.
तो अब हम कॉमा एंटर करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे फॉर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन. Now in the next line we need to add another column. So what is the name of our next column? ename, Ename. And what is its data type? varchar 10, Varchar 10. Remember here they ask us to add variable width. So for variable width we need to use varchar data type. और आपको ओपन ब्रैकेट में इसकी लेंथ देनी है. मीन्स व्हाट, आप ई नेम में 10th 10 लेटर से ज्यादा लेटर एंटर नहीं कर सकते. अगर आपको ज्यादा लेटर एंटर करने होंगे तो आप ये 10 को 20 कर दोगे. विच मीन्स व्हाट, आप 20 से ज्यादा लेटर एंटर नहीं कर पाओगे इन ई नेम. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गिव दिस नंबर. सो सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट हुआ. देन यू गिव कॉमा. अगेन यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन by enter, by pressing enter. Now what is the name of our next column? designation, So in short I am writing desig. And what is its data type? Again you can fixed, see its data type is varchar. Now you can see third column be enter ho gaya. Now you press enter by giving comma. What is the name of next column? sir, it is having fixed width na, so varchar will come. Okay, having fixed width. Okay, so varchar नहीं आएगा, char आएगा. Okay, so let me repeat. Now अब हमें ये अब यहाँ पे हमारी गलती हो गई. विच मीन्स वॉट, हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा और नेक्स्ट में हमें यहाँ पे फिर से लिखना है. दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते. आपको सारे सेंटेंस फिर से लिखने पड़ते हैं इन दिस MySQL. दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. विच मीन्स वॉट, अब हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी तो आप इस सेंटेंस को यहाँ पे ही क्लोज कर दो यूजिंग सेमीकोलन और एंटर प्रेस करो. देन यू कैन सी ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, इसीलिए हमें एरर शो हुआ. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. दैट इज अगर आप कोई मिस्टेक करोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि आपने कोई भी मिस्टेक की है कि नहीं यूजिंग दिस एरर कमांड. तो आपको उस एरर को रेक्टिफाई कर लेना है. नाउ अगेन वी नीड टू टाइप ऑल द थिंग्स. Okay, then our second column is empid. Again remember, फिर से हम टाइप करते बैठेंगे क्या? नहीं, हम एरो कीज का यूज करेंगे. बिकॉज जो भी हम क्वेरीज पहले से यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो ऑलवेज मेरे सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट रहेगी. तो हम एरो कीज यूज करके उन्हें फिर से यूज कर सकते हैं. दिस इज अगेन द ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. ओके, ई नेम इज वर्कर. नाउ डेसिग्नेशन हमारा फिक्स्ड लेंथ का है, इसीलिए हम अब कैर यूज करेंगे. ओके, अब चेक करो करेक्ट है. यस. Yes, sir. Now you press enter. Okay, now what is the name of next column? DOJ, date of joining. DOJ, and its data type is date. Okay, then give the comma, then press enter. Now you need to add the next column name. So what is our next column name? Manager ID. Now see, if you see this table, then our next column is manager ID. But if you see this question, then here our next column is grade. ओके लेकिन मैंने लास्ट दैट इज यस्टरडे जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था उसमें मैंने ग्रेड भी एंटर किया था. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर ये खाली इतना ही मैक्सिमाइज हो रहा है. ओके, तो अगर मैं वो ग्रेड का भी कॉलम ऐड करूँ तो फिर जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो फिर यहाँ पे फिर से नेक्स्ट लाइन पे आता है. सो फॉर अवॉइडिंग दैट
we are not entering this grade column. ओके, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास ग्रेड का कोई कॉलम नहीं है, तो हम ये ग्रेड का कॉलम एंटर नहीं करेंगे. आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि फिर जो भी टेबल हमें शो होगा वो थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखेगा, जो मैंने कल देखा था. सो फॉर अवॉइडिंग दैट आई एम नॉट एंटरिंग दिस ग्रेड कॉलम इन दिस टेबल. ओके, सो अब हम सीधा मैनेजर आईडी पे जाएंगे. सो मैनेजर आईडी इज mgr and id. This is the short form. Then what is its data type? Small int. Small int. So you can see here we have completed this column also. Then you just give comma, press enter. Now you need to add the next column in the next line. That is, so our next column is salary. So in short, we are going to enter sal. And what is its data type? Decimal. Decimal. Now what is the meaning of this decimal 5,2? See, decimal 5,2 is nothing but कि कितने डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल पॉइंट मिलने चाहिए. ओके, लेकिन यस्टरडे मैंने ये जो डेसिमल 5,2 डाला था, तो हम सैलरीज 8,000 16,000 इस टाइप से एंटर नहीं कर पा रहे थे, तो फिर मुझे वो चेंज करना पड़ा था. इसीलिए मैं डेसिमल को कोई भी लेंथ नहीं दूंगा, दैट इज कितने डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. यू कैन चेक दैट, okay, by performing this at your home. So here I am not giving any length, proper length to this data type. ओके, क्योंकि हम सी जब भी हम डेसिमल डालेंगे विच मीन्स व्हाट, हम कितना भी बड़ा नंबर एंटर कर सकते हैं, लेकिन जब भी मैं ये रेस्ट्रिक्शन डाल दूं इन दिस ओपन ब्रैकेट, विच मीन्स व्हाट, हमें पर्टिकुलर इसी साइज का नंबर एंटर करना पड़ेगा. सो फॉर अवॉइडिंग दैट आई एम गिविंग ओनली डेसिमल डेटा टाइप टू दिस सैलरी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. Now you can see we have completed this column also. So give comma and move towards the next line. Now we need to add one more column. So what is our next column name? Department ID. Department ID. Okay, so here our first letter has to be capital. Okay, small डाला तो आपके टेबल में small शो होगा, बट मुझे कैपिटल शो करवाना है, इसलिए मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल डाल रहा हूँ. देन इट्स डेटा टाइप इज, रिमेंबर डेटा टाइप अभी भी जब भी आप कभी एंटर करोगे आफ्टर योर कॉलम नेम, देन आपको स्पेस देना है. देन इट्स डेटा टाइप इज स्मॉल इंट. Okay, so we have completed this column also. Then you give comma, press enter, and the last column is commission, that is COMM, and its data type is again small int. Okay, now can you tell me, see here for the grade, they ask us to type integer, and for the department ID they ask us small int. So can you tell me what is the difference between small int and integer data type? एंड रिमेंबर यहाँ पर हमारे सारे कॉलम्स एंड हो गए, इसीलिए अब हम लास्ट में कॉमा नहीं डालेंगे. हम क्या डालेंगे, ये जो ओपन ब्रैकेट हमने ओपन किया था वो एट द एंड हमें क्लोज करना है. क्लोज करने के बाद हम सेमी कोलन डालेंगे फॉर कंप्लीटिंग दिस स्टेटमेंट, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रेस एंटर. सो यू कैन सी क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, 1.40 सेकेंड्स. तो ये आपको नोट डाउन करना है इन योर नोटबुक. ओके, साइमल्टेनियसली नोट डाउन करते चलो, मैं हर बार आपको नहीं बताऊंगा कि आपको नोट डाउन करना है. ओके,
अब हमारे ये सारे कॉलम्स ऐड हो गए। फिर से हमें अगर ये कॉलम्स चेक करना है तो हम कौन सी कमांड देंगे? Select star from DPT. सी, अब हम डिस्क्राइब कमांड देंगे फॉर ऑब्जर्विंग कितने कॉलम्स है। ओके, डिस्क्राइब कॉलम नेम emp11, then give semicolon and enter. Okay, now here I am getting an error. So you can see मैंने ये 11, see our name table name is emp11 and और यहाँ पे मैंने खाली 2 बार ही 1 enter किया, which means what, we made a mistake. So you just correct it. So in this way we can describe our table. Okay, see remember select star हम कब यूज करेंगे? जब भी हम कोई भी डेटा एंट्री हमारे टेबल में एंटर करेंगे, कोई भी डेटा हमारे टेबल में एंटर करेंगे तब हम सिलेक्ट स्टार यूज करेंगे। व्हाट हैपन्स अगर आप यहीं पे सिलेक्ट स्टार यूज करते हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, ईएमपी, EMP11। ओके, अब हमें चेक करना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि आप में से किसी ने बोला कि हम सिलेक्ट स्टार यूज करेंगे। So you can see we are getting its output is empty set. Now you can think of the logic behind it. empty set क्यों आया? क्योंकि अभी तक हमने कोई भी रोज एंटर नहीं किए इन माय टेबल। ओके, तो आपको अगर जब भी चेक करना होगा कि हमारे कॉलम्स कितने ऐड हो गए हैं हमारे टेबल में, फॉर दैट यू नीड टू गिव दिस डिस्क्राइब कमांड। तो यहाँ पे आपको शो होगा कि कितने कॉलम्स आपने एंटर किए अलोंग विथ इट्स डेटा टाइप एंड इट्स constraint. You can see in the fourth column here we are having primary key constraint. Is it clear to everyone? Yes. Anybody want to ask any questions in it? Yes, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क. If not, then please inform me so that we can go ahead. No, sir, no questions. Okay. Now you can see we have completed this question also, that is create table वाला question EMP, that is अब हमारा table create हो गया. Now nextly what we need to do, we need to insert these rows in my table. Okay, so you can see here we are having a huge table. Okay, that is not too much huge, but for me it is a huge table because I am not a typist. तो हम धीरे धीरे करके टाइप करेंगे. Okay, so how I am going to insert this? See, now first you tell me how I am going to insert the first row. Insert into employees. Okay, so wait, insert into EMP. Remember, आपको जो भी हमने टेबल नेम डाला है आपको सेम टेबल नेम यूज करना है, otherwise you will get some error. So insert into EMP111, then Values. values, then you need to open a bracket. आप स्पेस देकर भी ओपन कर सकते हो या इसको अटैच करके भी ओपन कर सकते हो. ओके, बिकॉज सी दिस इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ओके, तो आप इससे अटैच कर भी करो या स्पेस देकर भी करो, क्योंकि जब तक हम सेमी कोलन एंड नहीं करते तब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. ओके, नाउ रिमेंबर, जैसे हमने कॉलम नेम एंटर किया है इन माय टेबल, अकॉर्डिंग टू हमें डेटा एंटर करना है. सो पहले हम किसका डेटा एंटर करेंगे? यस,
first entry corresponds to which column? Field. Sorry, MPID. EMPID. So it is 7369. You can see on the right hand side where we are having that table. So our first EMPID is 7369 which is in numeric. इसीलिए हम उसे डबल कोट्स में एंटर नहीं करेंगे. देन सेकेंड एंट्री एंटर करने के लिए हमें पहले कॉमा देना पड़ेगा फॉर सेपरेटिंग दिस टू एंट्रीज. So use comma. Now we need to enter now e name. So e name is in numbers or in words? Words. Words, which means what? We need to enter that name in double quotes. Okay, and that word is Smith. Okay. Then again you need to give comma. Now you enter the third entry. Now third entry corresponds to which column? Designation. Designation. So designation is in numbers or words? Words. Words, which means again we need to use double quotes. Then you give comma. Now our next entry is next entry is for DOJ. Now observe DOJ is in words or numbers. 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 Now remember here DOJ is in numbers, but its data type is date. Okay. So date को भी हम double quotes में ही enter करेंगे. Okay, this you need to remember. While entering any date in SQL, you need to enter that date in double quotes. So 2015, 12, and 17. Okay, then give comma. Now enter the next entry. Now next entry corresponds to which column? MGRID. MGRID. And you can see it is in numbers. So you can give it directly. That is 7566. Then give again comma. Now next we need to enter salary, which is 8000. Then again give comma. Next entry is DEPTID, which is again in numbers. So give 20. Then give comma. Now next entry corresponds to what? Commission. Commission. Now is it number or word? Word. But what is its data type? Small n. Small int. Small int. Means what? उसकी एंट्रीज भी नंबर्स आएंगी. इसीलिए ये जो नल है तो हम उसे डबल कोट्स में एंटर नहीं करेंगे बिकॉज द डेटा टाइप ऑफ कमीशन इज स्मॉल इंट. तो हम ये नल एज इट इज लिखेंगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. So you can see we entered all the entries corresponding to each column in it. Then you just complete this sentence by completing this bracket along with semicolon and just press enter. So you can see query OK, one row affected 0.07 seconds. Okay. Now what happens? अगर मैं ये फर्स्ट वाली एंट्री जो है दैट इज फर्स्ट एंट्री इज करस्पॉन्ड्स टू EMPID. ओके. अगर मैं इसे रिमूव कर दूं यहाँ से विच मीन्स वॉट हमने एक कॉलम की एंट्री यहाँ पे एंटर नहीं की. तो अब मैं एंटर करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे एरर आता है कि नहीं आता. ओके. सो यू कैन सी जब मैं वो फर्स्ट एंट्री यहाँ से रिमूव कर दूंगा देन वी विल गेट एन एरर 1136 column count doesn't match value count at row 1. विच मीन्स वॉट जितने हमारे कॉलम्स थे हमने उनसे कम एंट्रीज इसमें एंटर की इसीलिए हमें एरर शो हुआ. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. एनी क्वेश्चंस इन इट?
No, sir. ओके, अब मान लो कि आपसे क्या होता, आपने ये सेकेंड इज ई नेम डालना है, वहां पे आप डेसिग्नेशन डालते और डेसिग्नेशन की जगह पे आप ई नेम डालते। बट दिस इज द सॉफ्टवेयर, इसे पता नहीं है कि ई नेम क्या होना चाहिए, डेसिग्नेशन क्या होना चाहिए, बट दोनों कैसे है, दोनों वर्ड्स में है। तो अगर आप ये उल्टा भी करते तो वो ई नेम क्या कंसीडर करता, ई नेम क्लर्क कंसीडर करता और डेसिग्नेशन स्मिथ कंसीडर करता। बिकॉज हमें पता है कि हमने वो नेम्स इंटरचेंज कर दिए, बट सॉफ्टवेयर को नहीं पता चलेगा। इज इट क्लियर? तो आप खाली ये चीज ध्यान में रखो, आप जब भी एंटर कर रहे हो करस्पॉन्डिंग टू रिस्पेक्टिव कॉलम, तो आपको वो प्रॉपरली एंटर करना है। वहां पे आपको एरर नहीं मिलेगा, बिकॉज फॉर दिस सॉफ्टवेयर इसके लिए क्लर्क भी एक नेम है एंड स्मिथ भी एक डेसिग्नेशन है। ओके, बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट स्मार्ट एज अस। Okay, now this is all about this software. Now we need to add the further rows. Okay, तो फिर से मैं same using up arrow की, ओके, अप एंड डाउन एरो की से आप फिर से जो आपने सिंटैक्स एंटर किया था आप वही यूज करके इसमें चेंजेस कर सकते हो। सो यू कैन सी यहाँ पे मैं वो लेकर आया यूजिंग अप एरो की। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट। ओके, अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, मैं जो भी एंटर कर रहा हूँ आप वो चेक करो कि मैंने करेक्ट एंटर किया है कि नहीं, और अगर कहाँ पे फॉल्ट होगा देन प्लीज लेट मी नो। नाउ फॉर द सेकेंड एंट्री वी आर हैविंग इट्स एम्प्लॉय आईडी इज 7499। इट्स नेम इज एलन। इट्स पोजीशन इज सेल्समैन। तब तक आप आपकी क्वेरीज भी लिख सकते हो इन योर नोटबुक, बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ लिटिल बिट टाइम। एज आई टोल्ड यू आई एम नॉट अ टाइपिस्ट। सो दिस एंट्री इज 2 एंड दिस इज 20। साइमल्टेनियसली आप ये भी चेक करो कि मैं रॉन्ग एंट्रीज एंटर तो नहीं कर रहा। 7698, then salary is 16,000, then DEPT ID is 30, and now commission is 3,000. Okay, now you can see we have entered the second row. Now you just press enter. Once again you just check whether the entries are correct or not, and if it is correct then just press enter. So you can see output is query okay, one row affected. Similarly you enter the remaining ones. ऑलवेज स्टार्ट विथ EMP ID। ओके, अगर आप पीछे से स्टार्ट करोगे देन आपको कुछ एरर मिलने की पॉसिबिलिटी है। ऑलवेज स्टार्ट विथ द फर्स्ट एंट्री, देन इट्स नेम इज वार्ड, डेसिग्नेशन इज सेम, then 2016 2 and 22, then manager ID is same but the salary is different, that is 12500, 12500, DEPT ID is same but the commission is different. Okay, so you can see now I'm pressing enter. So you can see query okay, one row affected. Now enter the next entry. Now next entry corresponds to manager. Okay, so his EMP ID is 7566. Now what happens अगर मैं same entry दूं, that is 7521. Okay, see firstly मैंने already 7521 entry always मतलब एंटर कर ही दी है। अगर मैं फिर से सेम
एंट्री एंटर करके मैं एंटर करूं, then what will happen? You can see we are getting an error. And what is that error? Duplicate entry 7521 for key emp111 dot primary. Now what is the meaning of this error? Yes, just tell me. Till then I am entering another value in it. सोचो और मुझे बताओ why we are getting this error over here. Because we used primary key and every entry should be unique. Yes. Okay, अगर आप EMP-ID duplicate use करते हो means same use करते हो, then it will show me this error because we have added primary key constraint on this EMP-ID. तो EMP-ID में जितने भी EMP-IDs होंगे सारे different होने चाहिए. That is the benefit of this primary key constraint. Okay, this is mainly used for roll numbers because roll numbers is never duplicate, or you can say exam numbers. Okay, एग्जाम नंबर्स कभी भी डुप्लीकेट नहीं होते. ओके, साइमल्टेनियसली चेक करते भी चलो मैं कुछ एरर कर रहा हूँ कि नहीं, और अगर किया तो भी जब मैं एंटर करूंगा तो फिर मुझे वो शो होगा. Then its manager ID is 7839. Salary is 29750. 9750. DPT ID is 20. And the salary is null. Okay, so just enter null. Okay, check करो correct है, then just press enter. Then you will get this query okay. Now the next one is salesman. Okay, तो अब मैं salesman वाला कमांड यूज करूंगा क्योंकि मुझे सेल्समैन वहां पे चेंज नहीं करना पड़ेगा. ओके, दिस इज द कॉमन सेंस. 7654. Then name is Martin. Okay, by mistakenly I have press enter. So you can see मैंने खाली ये नेम सेम डाला, दैट इज सी. यहाँ पर मैंने EMP-ID तो चेंज कर दिया लेकिन गलती से मेरे से एंटर प्रेस हो गया, विच मीन्स यहाँ पे प्राइमरी की को तो कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज EMP-ID मैंने चेंज कर लिया, लेकिन ये मार्टिन के जगह पे आया अभी वर्ड ही शो हुआ. ओके, नो वरी. अब मैं फिर से एंटर नहीं करूंगा, आपको वही कंसिडर करना है. मार्टिन के जगह पे हम फिर से वर्ड ही कंसिडर करेंगे. ओके, नाउ आई एम एंटरिंग अनदर एंट्री फॉर मैनेजर. सी, यहाँ पे मुझे एरर क्यों शो नहीं हुआ, बिकॉज मैंने EMP-ID चेंज कर दिया विच इज नॉट द डुप्लीकेट वन. Now 7698. Name is Black. BLAKE. Post designation is manager. Then 2651. Right? 2651. Then 7839. Salary is 28500. Then DPT ID is 30. And again it is null. Now you just press enter. Again query okay. Now enter the next entry for clerk.
and the position of clerk is also manager, so I am going to use the same query. 7782, then name is CLARK, post is same manager. Now year changed, that is 2017, 12 and 9. Then again, marginal manager ID is same, but the salary is different. Now it is 24500. Department ID is 10 and the salary commission is null. Now press enter, query OK. Now enter the next one. Now in the next, we need to enter 7788 88. Name is Scott. Post is analyst. Now what do we mean by analyst? Yes, anybody want to answer? Who is analyst? Sir, I think analyst is who analyzes the data and all. Yes, in simple words, analyst is the person who analyze the data. बट सी वो खाली एनालाइज ही डेटा नहीं करता, वो बहुत सारे वर्क भी करता है. Okay, but I am not going in detail. So simplicity, analyst is a person who analyze the data. See, why I am asking these questions, because for typing I required some time. So I need to spend that time. That's why I'm asking this kind of questions. अदरवाइज हमें यहाँ पे ये लेना देना ही नहीं है एनालिस्ट क्या काम करता है. 7839, then name is King. King. Now he is a president. Now I am not going to ask you what is president, because I am hoping कि आपको ये पता होगा. ओके, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो अगर आप यहाँ पे एंटर करते तो फिर ये सी कंसिडर करता था. देन डेट ऑफ जॉइनिंग इज 2016, then 11 and 20. Okay, now manager ID is null because he is a president. Salary is 50,000. Department ID is 10. And the commission is 0. Okay, now I am pressing enter. Which means what? We have entered all the rows in my table. Now which query I need to give to check whether we have entered? We need, now our aim is to see this table in my SQL. So which query I need to give? Select star. So select star from, what is the table name? EMP 111. EMP 111. Then for ending the statement, use semicolon. Now press enter. So you can see we are having a table. Now observe this table.
and check whether it is exactly similar to this practical sheet or not. Yes, is it similar to the practical sheet table? Yes, sir. Observe it carefully because you know that I No, did a sir. mistake. No, sir. One employee ID is missing. See, EMP IDs are as it is. Okay, but observe how many rows we are having in our practical sheet. 3 and this 3 6 and this 3 9. Here also 3 3 3 6 and 3 9. Okay, so we are having 9 rows. Okay, नीचे लिखा भी है, हम खाली फुकट काउंट कर रहे थे. But what is the change in it? सी अगर आप ध्यान से EMP देखोगे name. तो ईएमपी नेम में वर्ड हमें 2 बार शो हो रहा है. दिस इज माय मिस्टेक कि मैंने एंटर गलती से प्रेस कर दिया था बाय चेंजिंग इट्स ईएमपी आईडी. इसीलिए हमें कोई एरर नहीं शो हुआ और हमने ईएमपी ई नेम को प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किया था, विच मीन्स व्हाट, अगर हम उसमें कोई भी वर्ड रिपीट करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे इस वर्ड के जगह पे मुझे मार्टिन डालना था लेकिन गलती से मेरे से एंटर प्रेस हो गया, तो फिर हमें ये रिजल्ट मिला. इज इट क्लियर? Yes, please let me know. Is it clear to you? So while performing our practical, what we have to write there, word only or the name which is given in the sheet? सी अभी के लिए अगर मिस्टेक हो गई है तो फिर आप वर्ड ही करो. अगर आप खुद से आपके पीसी पर परफॉर्म करोगे तो आप मार्टिन कंसीडर कर सकते हो. इज इट ओके? Okay. ओके. So this is all about our first 4 questions. Now we need to perform the next questions. ओके, तो आज हम खाली 10th क्वेश्चन तक करेंगे क्योंकि 10th क्वेश्चन तक ही हमारे 6 बज जाएंगे और हम 11 से नेक्स्ट प्रैक्टिकल में करेंगे. Okay, so we have completed first 4 questions. Now we are moving towards this question. So as you all know, we have already performed this question. That is, display the content of table department. So which query I need to give to display the content of this table department? Yes, again we are performing that query. Okay, which query I need to give? Select star from department. Select star from DPT. Okay, now you just press enter. So this is the answer of your question number 3. That is, display the content of the table department. Use this query select star from department and note down this output in your notebook. Along with this 4 rows in a set 0.01 second. Okay, or you can take the screenshot of it and after that you can write it in your notebook. Okay, so that we will perform more questions in today's practical. Okay, now just think on this fourth one. जैसे मैंने आपको बोला, कभी भी आपका क्वेश्चन डिस्प्ले से स्टार्ट होगा तो आपकी क्वेरी भी ऑलवेज सिलेक्ट से स्टार्ट होगी. So you can see here in this fourth one, we need to display e name and commission from EMP. So can you tell me the syntax for it? First is select, as this question starts with display word. So हमारी query भी select से start होगी. Then what else we need to write? At least guess so that we can correct it. Yes. Select e name
select e name and commission. and commission. Now here instead of and we are giving comma. Okay, so e name commission. नाउ सी यहाँ पर हम ये जो कॉलम नेम्स हमने हमारे टेबल में एंटर किए हैं वही एज इट इज हमने यूज करना है. दैट इज ई नेम का ई कैपिटल है तो हम यहाँ पर भी ये ई कैपिटल ही यूज करेंगे. कमीशन में हमने खाली COMM लिखा है विथ सी कैपिटल तो हमें वो एज इट इज लिखना है. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पूरा कमीशन लिखेंगे. अगर आपने वो पूरा लिख दिया और सेमीकोलन दबाया देन यू विल गेट सम एरर. जो भी आप कॉलम नेम एंटर करते हो वाइल क्रिएटिंग योर टेबल आपको सेम कॉलम नेम यूज करना है वाइल परफॉर्मिंग एनी क्वेरीज इन इट. Okay, so select e name comma commission, then from which table? Yes, Employee 111. employee 111. Then for completing this statement use semicolon. Now press enter and see what magical happens. Okay, so it is showing me e name and commissions only from my EMP table. ओके सो यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट और 2-3 क्वेरी परफॉर्म होने के बाद आप एक ही बार स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके स्क्रीनशॉट भी कम होंगे. ओके सो यहाँ पे हमने फोर्थ वाले का भी आंसर कर दिया. लेकिन ये क्वेरीज आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है क्योंकि जब भी अगर आपको कहीं पर मिलेगा पीसी या फिर लैपटॉप तो आप वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो. बट रिमेंबर Sir, here why we have not used and between that e name and commission? लेट्स चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. कुछ भी डाउट है आप इसमें डायरेक्टली एंटर करो और चेक करो एरर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. ओके सो जब मैं एंड एंटर करूंगा देन वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ डेटा. इज इट ओके? Okay. दैट्स व्हाई दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर एंटर नहीं किया देन यू विल गेट सम एरर और सम डिफरेंट आउटपुट्स. सो आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे के परफॉर्म करते हैं. Okay. Now our next question is change the column name DESIG to job of EMP table which means what. अब ये जो भी थर्ड कॉलम है DESIG का वो हमें जॉब के नेम से रिप्लेस करना है. दैट इज DESIG के जगह पे अब हमें जॉब ये वर्ड एंटर करना है इन माय टेबल. सो विच कमांड आई नीड टू गिव? Alter. So can you tell me that? Alter, then Alter table. alter table EMP. EMP 111 EMP means alter 111. table name. Here table name is EMP 111. Then अब हमें क्या Change. करना है? चेंज करना है. सो चेंज DESIG. क्या चेंज करना है? डेसिग. बट डेसिग का डी कैपिटल. डेसिग टू. GOV. अब यहाँ JOB. पे हम टू नहीं एंटर करेंगे. ओके डायरेक्टली यू एंटर JOB. डेसिग टू जॉब एंड हियर यू नीड टू ऐड इट्स डेटा टाइप. अगर डेटा टाइप नहीं डाला तो जो आपने डेसिक को डेटा टाइप डाला था वही जॉब को भी असाइन होगा. और अगर आपको जॉब का डेटा टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो. यू कैन सी इन माय
Here I am having the designation data type has worker10. Okay, so let me keep it as it is. Or if you want, you can just retype it. Worker10. Which means what? जॉब का भी अब डेटा टाइप क्या बन जाएगा? worker10. ओके, अब हमें चेक करना है कि ये कमांड प्रॉपर है कि नहीं है, तो आप एंड में सेमीकोलन एंटर करो एंड जस्ट प्रेस एंटर. ओके, सो यू विल गेट द आउटपुट एज क्वेरी ओके. मीन्स हमारी क्वेरी ओके है. 9 रोज अफेक्टेड. हमारे टेबल में 9 ही रोज थे. रिकॉर्ड्स 9, डुप्लीकेट्स 0 एंड वार्निंग 0. Which means what? Now our column has changed to basic to job. खाली column name change हुआ basic to job. Now if you want to see that, then which command you need to give? Describe. Either you can give describe or you can give select star. Okay, describe अगर आप दोगे तो आपको इसके जैसा आउटपुट मिलेगा. Okay, here you can see यहाँ पे फील्ड में डी एस आई जी के जगह पे जे ओ बी आएगा. और अगर आप सिलेक्ट स्टार की कमांड देते हो तो यहाँ पे इस टेबल में बेसिक के जगह पे जॉब शो होगा. सो लेट मी डू बोथ. सी इफ यू वांट you can give DSC also. Okay, it is working in command prompt. I don't know whether it is working here or not. So let me check that. DSC table name EMP11. This is the DSC is the short form of describe. Okay, so you can see it is working here also. Either you can give the full name describe or you can give it short DSC. So here you can see अब हमारे basic के जगह पे यहाँ पे मुझे क्या शो हो रहा है? जॉब. अगर आपको कॉलम में चेक करना है देन गिव दिस कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP111. ओके, हियर ऑल्सो यू कैन सी ये बेसिक के जगह पे अब मुझे यहाँ पे जॉब शो हो रहा है. ओके, ये आपको लिखना नहीं है. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. अगर आपने चेंज किया है और आपको चेक करना है कि वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप ये कमांड देकर चेक कर सकते हो. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, is it clear to everyone? Yes. Sir. Okay, so please inform me so that we can complete this practical as soon as possible. Okay, so now we have completed first 5 questions. Now let's move towards the next one. Okay, now you can see here is a bunch of questions. बट हम खाली 10 तक करेंगे क्योंकि मैंने कल भी 10 तक ही करवाया और 11 से 20 तक हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में करेंगे. Okay, now just think on this sixth one. Again you can see ये क्वेश्चन डिस्प्ले से स्टार्ट हो रहा है तो हमारी का क्वेरी और यू कैन से सिंटैक्स भी हमारा सिलेक्ट से स्टार्ट होगा. सिलेक्ट से स्टार्ट होगा. Then let me read this question for you. Sixth one is display the e-name and date of joining for every employee who was joined in the year 2017. Now just try to make the syntax for it and let me know. Our first word is select. Then what we want in this statement, we want e-name and DOJ. Okay, so we are entering e-name, comma DOJ. जो भी हमने DOJ मतलब ऊपर देखो DOJ कैपिटल में है तो हमें यहाँ पर ये कैपिटल में ही एंटर करना है. ओके, सो हमें क्या शो करना है? ई नेम एंड DOJ. तो जो भी हमें शो करना है इन माई आउटपुट
वो हम सिलेक्ट के बाद एंटर करेंगे, दैट इज ई नेम एंड डीओजे. ओके, नाउ टेल मी what is the syntax after it, after this. ओके, सिलेक्ट के बाद में क्या आएगा? फ्रॉम टेबल नेम. ओके, अब आगे आपको जो भी सोचना है वो इसके आगे सोचना है. नाउ टेल मी इसके आगे क्या आएगा? सी, अब खाली आप इतना ही कमांड दोगे तो आपको ई नेम एंड डीओजे शो होगा, बट वी वांट वन मोर कंडीशन ऑन इट, विच इज नथिंग बट जिनका भी ईयर खाली 2000 है, हमें खाली वही एम्प्लॉय शो करना है. So you can see in my table how many employees are there whose year is 2017? 2. 2. Two, namely Clark and Scott. ओके, तो हमारे आउटपुट में खाली ये दो ही रिकॉर्ड शो होना है. तो हम कौन सा सिंटैक्स यूज करेंगे? Where? यस, वी आर यूजिंग वेर क्लॉज. वेर, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? किस पे? DOJ. डीओजे पे कंडीशन है. डीओजे इज इक्वल्स टू 2017. Okay. Now let me show you the output of this, and after that you need to correct it. Okay. आपने बोला where doj is equals to 2017. Then if I pressed enter, then I am getting its output to be empty set, one warning, 0.01 second. Now tell me what is the mistake in it? क्योंकि हमें आउटपुट क्या चाहिए था? क्लार्क एंड स्कॉट, बिकॉज दिस टू आर हैविंग ईयर 2017. अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमने कौन सी क्वेरी दी है? डीओजे इज इक्वल्स टू 2017. बट डीओजे कॉलम में आप ऑब्जर्व करो, कहीं पर भी एंट्री है क्या एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2017? यस, No. नो. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एम्प्टी सेट. अगर आप ये डेट एज इट इज डालते, दैट इज 2017-12-9, तो आपको खाली क्लार्क की एंट्री मिलती थी इन योर आउटपुट. बट व्हाट वी वांट, वी नीड टू शो बोथ द एंट्रीज विथ द ईयर 2017. इसके लिए हम इस क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे यूजिंग ईयर, YEAR, और ये जो DOJ होगा इसे हम ब्रैकेट में एंटर करेंगे. ओके, मीन्स डीओजे का ईयर जो भी 2017 होगा, हमें वो एंट्रीज शो होंगे. नाउ लेट अस चेक व्हाट इज द आउटपुट. नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग क्लार्क एंड स्कॉट with DOJ year as 2017. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, any questions in it? Okay, No, again sir. I am repeating, this is a structure query language. अगर आप proper structure डालोगे तो आपको proper output मिलेगा. Otherwise you will get some different kind of outputs. Okay, so this is the answer of sixth one. Now let us try to proceed with the next one, that is display the employees whose annual salary ranging from 22,000 to 45,000. Now again, if you see this question properly, then this question starts with display. तो query हमारी start होगी select.
ओके, देन सिलेक्ट के बाद में हमने कॉलम नेम एंटर करना है या फिर स्टार एंटर करना है। सी कॉलम नेम हम कब एंटर करेंगे, जब हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा कि मुझे खाली ये दो ही कॉलम चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें खाली ई नेम एंड डीओजे चाहिए था, इसीलिए हमने सिलेक्ट के बाद में खाली ये दो कॉलम नेम से एंटर किए। लेकिन अगर आप ये 7th क्वेश्चन ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई नहीं किया है कि मुझे कौन सा कॉलम चाहिए। ओके, तो हम पूरे के पूरे एंट्रीज ही शो करेंगे। सो फॉर शोविंग ऑल द एंट्रीज वी नीड टू यूज स्टार कमांड। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम विच इज EMP111। अब हमें जो भी करना है वो इसके आगे करना है। नाउ व्हाट वी वांट इन द 7th प्रॉब्लम, we want annual salary ranging from 22,000 to 45,000. But if you observe this table carefully, then this salary is what? Which salary? Remember, salary is always on a month. Okay? मतलब ये per month की salary है। और in this question they ask us to calculate annual salary. So what we are going to do? अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा आपकी सैलरी 8,000 है और मुझे आपकी एनुअल सैलरी पता करनी है, कैसे करूंगा? Multiply by 12. 8,000 multiplied by 12. 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अब मुझे इन सब की एनुअल सैलरी का पता करनी है, तो कैसे करेंगे? दिस कॉलम सैल, नाउ फॉर मल्टीप्लिकेशन वी आर यूजिंग एस्ट्रिक सिंबल एंड 12। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके, बट दिस इज व्हाट, दिस इज एनुअल सैलरी। ओके, तो अब जब भी मैं यहाँ पे डबल कोट्स में कोई भी वर्ड या फिर कोई भी वैल्यूज एंटर करूंगा, then it means it is not the part of our query. okay, सी जब भी आप किसी क्वेरी में डबल कोट्स में कोई भी नेम कोई भी वैल्यूज या कुछ भी एंटर करते हो, then that double quotes वाला is not the part of our query. But why we are entering it? Because in output जो भी आउटपुट आएगा उसे ये जो भी डबल कोट्स में हमने एंटर किया है वो एज इट इज हमारे आउटपुट में हमें शो होगा। Okay, now annual salary. And what is the condition on annual salary? Ranging from 22,000 to 45,000. Wait a minute. Okay, in this question we need to show e-name and annual salary. Okay, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मेंशन भी किया है द एम्प्लॉयज हुज एनुअल सैलरी, मीन्स हमें हमारे आउटपुट में खाली ई नेम और उनकी एनुअल सैलरीज ही शो करनी है, हमें पूरा का पूरा टेबल शो नहीं करना है। अगर पूरा का पूरा टेबल शो करना होता तो हम स्टार कमांड देते, लेकिन यहाँ पे हमें खाली दो ही कॉलम शो करना है तो हम वो कॉलम्स पर्टिकुलरली एंटर करेंगे। तो अब इसमें हमें कौन से दो कॉलम चाहिए? ई नेम and salary multiplied by 12, which is nothing but annual salary wala column. Okay, wait a minute, let me show you the output of this, but before that you need to complete this statement. Okay, now we need to give this range between 22,000 to 45,000. So for giving this range we need to use where clause, where annual salary, that is sal multiplied by 12 between
What is the range? 22,000 and 45,000. Now for completing this, you need to use semicolon at the end. Now what you expect? What is the output of it? Yes. आप फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट कर लो. What is 12 multiplied by 8? Yes. What is the annual salary for Smith? Yes, I want answers from your side. What is the annual salary of Smith? Calculate it orally, just multiply 8,000 by 12. 96,000. 96. 96,000. Okay, now remember in this column salary, 8,000 ही सबसे छोटा है और उसकी एनुअल सैलरी क्या आ रही है 96,000. और हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ई नेम एंड सैलरी whose annual salary is between 22,000 and 45,000. Then what you expect? What is the output of this query? Empty set. Empty set. Empty. Okay, now let me show that output. E name in the field list. Did we? Yes, कुछ मिस्टेक की हमने. सर टेबल नेम नहीं लिखा है. Okay, table name नहीं लिखा है. Yes, correct. Okay, so from EMP 111. Now check. Now I am pressing enter. So you can see we are getting its output to be empty set. Which means what? इनमें से कोई भी नहीं है जिनके एनुअल सैलरी 22,000 से 45,000 है. But what happens if I replace this 20,000 by 22,000 by say 2 lakh 20,000 and 4 lakh 50,000? Means here I am increasing 1 0 now. Now let us check what is the output. Okay. So यहाँ पे हमें जोन्स की एनुअल सैलरी मिल गई by using this sal multiply by 12. Okay, you can orally calculate it. Observe the name Jones and its corresponding salary is 29750. Okay, कोई easy है. Scott. Yes, Scott is analyst and observe its salary. Per month salary is 30,000. Then you just multiply this 3 by 12. Then we are getting its annual salary to be 36, or you can say 3,60,000. So you can see in the row number 3, we are getting its annual salary to be 3,60,000. In this way, you can orally calculate it and check it whether your answer is correct or not. Is it clear now? Yes, sir. ओके. Yes, sir. तो आपको जिसका आउटपुट पूछा है आप वही लिखोगे. 22,000 से 45,000 पूछा है, देन योर आउटपुट इज एम्प्टी सेट. तो इंस्टेड ऑफ ये 22,000 है, हमें एम्प्टी सेट करके कोई आउटपुट नहीं चाहिए, तो आप ये 22,000 को 2,20,000 कर दो और 45,000 को 4,50,000 कर दो एंड राइट डाउन दिस आउटपुट. Okay, because we don't require this empty set as a output. Okay. Now think on the next one. Display e-name, DEPT ID and salary for those employees whose e-name ends with letter G.
Again, the question is starting with word display. So हमारी query भी select से start होगी. Now in this query, we want to show these three columns, namely ename, DEPTID, and salary. So just enter these columns, ename, then comma, DEPTID, then again comma, and salary. लेकिन हमने टेबल में सैलरी को साल लिखा है. ओके, फ्रॉम ईएमपी टेबल, ईएमपी 111. अब जो भी आपको सोचना है वो इसके आगे सोचना है. Now how I am going to get those employees whose e-name ends with the letter G? For that you just need to observe this table. Do we have any e-name whose ending letter is G? Yes. Yes, namely the last one, which is a king. But हमें वो इस query से find out करना है. Because this is the smaller data, इसीलिए हमने orally calculate कर लिया. But what happens if our data is bigger? For that we need to use this query. So can you tell me? Where percentage G? Where, again we are using where clause. Where, अब where हम किस पे find out कर रहे हैं? e name पे find out कर रहे हैं, तो हमें e name भी लिखना पड़ेगा. Where e name. अब e name कैसे चाहिए? सी, आपका क्वेरी तो सही है परसेंटेज जी, बिकॉज परसेंटेज रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल लेंथ. ओके, Sir, we have to use like clause. yes, so we need to use like clause. So e name like. Now you just give that syntax in double quotes. Okay, so like percentage and G. Okay, see, whenever you are going to write percentage G, which means what? आगे आपके कितने भी लेटर्स रहने दो, हमें एंडिंग लेटर जी चाहिए. ओके, तो लास्ट का लेटर जी फिक्स होगा और आगे कितने भी लेटर्स होंगे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज जी. ओके, सो यू कैन सी. अगर मैं आपको पूछता कि हमारे पास कितने ई नेम्स है हुज स्टार्टिंग लेटर इज जी, तो क्या करते हम? G percentage. जी परसेंटेज. एग्जैक्टली. Now I am pressing enter and let's see what magical happens. So you can see हमें खाली 3 columns ही देखने थे, namely e name, DEPTID and salary. And e name whose ending letter is G. तो यहाँ पे हमारे टेबल में खाली एक ही वर्ड है whose ending letter is G, namely king. Hence in the output we are getting only king. Now what happens? ओके ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे. ओके, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ ऑब्जर्व द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. Okay, now if you observe this 8 and question number 9, then in question number 8 we need to specify these 3 columns in my table. But if you observe this question number 9, then here they don't ask us to specify any column. Okay, so अब हमें कोई भी column specify नहीं करना है, हमें सारे entries चाहिए in my column. So which command we need to use? Select star. Select star. So select star from EMP table, where what we want names contains letter LL, which means where ename like
अब मुझे बताओ यहाँ पे हम क्या एंटर करेंगे? Percentage double L percentage. परसेंटेज डबल एल परसेंटेज, एग्जैक्टली. नाउ व्हाट इट मीन्स, सी आगे कितने भी लेटर होने दो हमें फर्क नहीं पड़ता, पीछे कितने भी लेटर होने दो हमें फर्क नहीं पड़ता. हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा वर्ड चाहिए, और यू कैन से हमें ऐसा ई नेम चाहिए जिसमें ये दो एल है, जो डबल एल है वो साइमल्टेनियसली आने चाहिए, दैट इज एक के पीछे एक. सो ऑब्जर्व, डू वी हैव एनी सच ई नेम where we are having this double L simultaneously? Yes. Allen. Allen. Alan. So our output would be Allen. So let us check. Now remember यहाँ पे हमने स्टार कमांड यूज किया, मीन्स एलन की हमें पूरी की पूरी रो शो होगी. सो यू कैन चेक दैट. ओके, तो हमारे पास सारे कॉलम शो होंगे एलन के. हियर यू कैन सी आउटपुट इज एलन. इज द क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर? Yes. Yes. Anybody has any doubt in it? ओके, अब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज प्रैक्टिकल. ओके, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना. बट टेल मी, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर दिस लास्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. अगेन यू कैन सी डिस्प्ले से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो हमारा फर्स्ट वर्ड सिलेक्ट ही होगा. सो सिलेक्ट. अब कोई भी कॉलम इसमें मेंशन नहीं किया है, तो हम पूरी की पूरी रो शो करेंगे, दैट इज स्टार फ्रॉम EMP 111. Now tell me which syntax we need to type. Where Where email like ename use like clause, then in double quotes A percentage N. double quotes, then a percentage n. Okay, now this gives me what? स्टार्टिंग लेटर हमारा ए होना चाहिए, एंडिंग लेटर हमारा एन होना चाहिए, और बीच में कितने भी लेटर्स हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. Now do we have such words, or you can say e name? Allen again. Again we are having Allen. So let us check what is the output of it. So you can see again we are getting the output to be Allen. That is, first name is A and ending with N in the one word only. Now what happens if I replace this word and by the word or? तो हमारा सिंटैक्स क्या होता? सी एंड मीन्स हमें एक ही ई नेम ऐसा, म्हणजे हमें ई नेम्स ऐसे चाहिए कि उसका स्टार्टिंग लेटर ए हो एंड एंडिंग लेटर एन हो इन अ वन वर्ड ओनली. बट इफ आई रिप्लेस दिस वर्ड एंड बाय और, विच मीन्स व्हाट, हमें वो सारे ई नेम्स भी चाहिए जिनका स्टार्टिंग लेटर ए है, पर जरूरी नहीं है कि एंडिंग लेटर एन होना चाहिए, और हमें वो लेटर्स भी चाहिए जिनका एंडिंग लेटर एन है, बट जरूरी नहीं है कि उनका स्टार्टिंग लेटर ए होना चाहिए. फॉर दैट विच क्वेरी यू नीड टू यूज? सी इसके जगह पे मैं ये भी शो करता आपको, दैट इज ओके.
अगर मैं आपको ये सिंटैक्स भी आपको आप यूज करते, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP111 वेयर ए नेम लाइक ए परसेंटेज एंड ए नेम लाइक परसेंटेज एन, तो भी आपको आउटपुट सेम ही आना था. यू कैन सी again we are getting the output to be Allen. This is the use of this word and. अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एंड को खाली और से रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ पर ही एंड को खाली और से रिप्लेस करो और चेक करो कि आउटपुट क्या आएगा. क्या हुआ? ओके, नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर. Okay, again we are getting only one output because हमारे डेटा में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो एक्सेप्ट एलन, जो ए से स्टार्ट हो रहा है और एन से एंड हो रहा है. इसलिए आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने वो मार्टिन के जगह पे फिर से वर्ड ही डाल दिया. अगर मैं मार्टिन डालता तो फिर आपको वो भी शो होता था. सो लेट मी चेंज दिस. अब मैं डाल रहा हूँ स्टार्टिंग लेटर इज एस एंड एंडिंग लेटर इज टी. ओके, इन दैट क्वेरी ending letter to be T and starting letter is S. ओके, अब मैं और की जगह पे एंड ही यूज करता हूं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है. ओके, तो आउटपुट हमारा आया स्कॉट. बट अगर मैं एंड की जगह पे और यूज करूं, नाउ लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट इज द आउटपुट. ओके, नाउ यू कैन सी वी आर हैविंग टू आउटपुट्स. जब मैं एंड यूज करता हूँ विच मीन्स व्हाट, हमें एक ही लेटर में आने चाहिए एस एंड टी साइमल्टेनियसली. लेकिन जब मैं और यूज करूँ तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही लेटर में आए. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एंड द वर्ड और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Anybody have any kind of doubt in it? Yeah, if you want to ask any questions. Now all of you please take the screenshot of this. ओके, सो बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में करेंगे. बट हियर इज अ होमवर्क फॉर यू. ये 11 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चंस है इनके क्वेरीज आप पहले से ही आपके नोटबुक में नोट डाउन करके रखोगे. एंड फॉर माय नेक्स्ट प्रैक्टिकल आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेरीज एंड आई एम रैंडमली कॉलिंग योर नेम फ्रॉम द पीपल लिस्ट एंड यू नीड टू टेल मी. जिसका भी मैं नेम कॉल करूंगा उसे मुझे आंसर करना है. इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so anybody want to ask any questions? No, sir. Okay, so here we have not completed this practical yet. 10 questions are remaining.